Hello everyone, welcome to eShe TV. I'm Ekta Kapoor. Today we're talking about women's roles in Hindi films, and we're looking at the new release Joram through a gender lens. To do that, we have with us the producer of Joram, Anupama Bose, along with three female leads, Smita Tambe, Megha Mathur, and Nimmy Raphel. Joram is directed by Devashish Makhija. The film premiered at the International Film Festival of Rotterdam and has traveled to over 15 prestigious film festivals worldwide. It had a global theatrical release in December 2023 and has won 4 awards so far. सर वो जो बंडल लेकर भागा था कोई चोरी का सामान नहीं, उसकी 3 महीने की बच्ची है। माओवादी बम्बई तक आ गया है, कुछ भी हो सकता है। बैकअप के लिए कुछ ऑफिसर गाँव छोड़ के नहीं भागे, बंदूक छोड़ के भागे रहे हम। So let's start with Anupama Bose. Anupama is a producer and visiting professor involved in producers programs at key Indian institutes. She's been the India distributor for the Oscar winner The Lives of Others and as executive producer for various acclaimed films. Joram is her debut feature film made in collaboration with Zee Studios. So, hi Anupama, thanks for being here today. Thank you for having us. So, Anupama, this is your debut feature film. Tell me what have been your main challenges and, of course, the main wins also about putting this film together. Yeah, I don't think any film is easy, so challenges are what they are. I think I shall probably talk about the good things that happened. And so I've known Dave for years and we've been wanting to do something together. One thing that I was very sure about is that it has to be accessible, the film, and it has to have a dialogue, a conversation within it, which is about people, survival, issues that largely engage and they come from the minorities, the marginalized, and stories around that. And so therefore, I think this was the big thing that just dropped in my lap. And I've always known Dave's work as something that triggers conversations. So over here, there were lots of triggers. And I think that was the good thing that happened. The good thing that happened was the people coming in together, the lovely women that you see here, all of them. And mere liye Joram jo kahani hai na, it's an avenging mother, actually a grieving mother, and a father trying to protect his child. Yeah. And when I look at it from that lens, the women become very interesting. It's almost like all three of them are at different points in their life, but they probably come from the same core. Yeah. In this world of men, they are women who are trying to survive on their terms, bring up their children, or be children to their parents, to their families. They are these women who are trying to find their space and make a win of it. And it's like I will leave the rest of the character description to all three of them. But this was for me the most fascinating thing in this film. And like you rightly said in the beginning, like everybody when we were chatting offline, that it was so great, all of them. I think that's where my core interest comes from. That I think I really got lucky with this film. Yeah. But it must have been challenging because it was your first production. So tell us a little about that process, also of being in this. I mean, you have represented other films. You've been the executive producer in very big films as well. But what has been the challenge for this particular film? So we, I think, shot across all kinds of terrains. We've done jungles, rivers, mines, all kinds. And it was very crunched. Like, yes, we had a studio, but studio doesn't mean कि 100 रुपए की चीज आप 150 खर्चा करोगे ना. It is always कि पैसे कम ही होते हैं. And within that, I think 28 days to pull off a film like this was very challenging. Extremely challenging. I think that was the biggest challenge. That within that resource, how do we kind of get it together? जैसे माइंस में हमारा होता था हमेशा every day it rained. So every morning at around 3-4, my line producer and EP would go to the mines, take the water out from one end, take the gitti because you can't get bahar ka stones in, right? So they would pick gitti from one end, put it into the pani wala ilaka so that it becomes navigable, and then they would call, "ठीक है, भर गया, अब आ जाओ." So we would start the day like that.
So it was little things like this, quite crazy. I had actually picked out a video where सब खड़े हैं, आराम से सब काम चल रहा है, अचानक there is धूल. Guys, you remember? वो फैक्ट्री के पीछे जब हम शूट कर रहे थे, खुले एरिया में, and suddenly there was this dust storm out of nowhere. सब ऐसे हवाई में उड़ रहा है और it was crazy. So that was the landscape we kind of shot in. So really, it was more that than anything else. And this was actually shot in the mines in Jharkhand. I mean, it's Yeah. This is, in fact, it's a difficult terrain because it's on the Jharkhand-Odisha border. It took us, I think, 3 months to find the locations. Every day, my line producer from Jharkhand would travel and look for locations. Every day, videos would come and they would say, And then we realized we were looking at the wrong end. We were looking at the coal bed. So then, and what they was very clear about was the open cast iron mines, the red of the mitti, the dust flying, difficult landscape, and then because we knew that's the climax. So उस तरफ जो है वो बहुत मुश्किल इलाका है because you go through the jungles and that's also a difficult terrain in terms of security. Like on all days of shoot in the mines, we had the sale guys, they had kind of figured out black cat security for us. So it was that kind of setup. But it's interesting that the film was about the rebels and, and then you were actually have to also might have to deal with them. Yeah. In fact, that there is this one stream crossing that Manoj's character does. वहां तो पानी के लिए आते हैं, वो जंगल ही वैसा है. So yeah, everybody would tell us, but they was very confident and he was like, मुझे नहीं लगता कुछ गलत हो सकता है क्योंकि हमारी नीयत सही है. I think it's nice. That kept us going. Yeah, but I think a lot of good endeavors in the world start out with the niyat, but I think we need a lot of God's grace also to protect us at a lot of points. Yeah, so I guess that but it is niyat. I think for everybody it was niyat. These 3 women who are sitting here right now, कितना मुश्किल था इनके लिए यार. In that, I mean, we end of the day are running around. We're not up on screen to maintain the look, to maintain your equilibrium, to catch the point where you have to perform, to do your thing, and in a crunch time. I think all of them, it came from niyat, and then came the hard work, then came the perseverance, then came the fun on the shoot, despite everything. But yeah, it's fun. तो ये बताएंगे, मैं तो perform नहीं कर रही थी ना. इनका होगा असली fun check. Fun था. Okay, let's do a fun check. Let's come to Smita now, one of the people who was on the screen. So let me introduce Smita as well. Smita Tambe Dwivedi is an award-winning actor who has worked in Marathi and Hindi films, television, and on stage. She completed her master's and MPhil in Marathi literature, and she was pursuing a doctorate in Marathi Lok Sahitya and Samaj when she got an offer to act in a television serial. And as they say, there was no looking back. So Smita, you have आपका जो role था इस film में, मतलब it was really for me a very eye-opening and a mind-blowing, character. I think there was so many shades of gray, and at the end, for me, that part where you realize that she's doing all this out of, because of her son and having lost her family. It just adds so much nuance to the whole character. वो कुछ parts होते हैं जब वो विदेशी को कहती है मेरे साथ खाना खा लो. You can sort of see the longing in her, the loneliness in her, which is coming out, I think, through your eyes in those scenes. कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, बस आंखें नजर आ रही होती हैं, कई scenes में तो. So tell me, I mean, for you, which was the most difficult scene? ये सब मतलब इतने, like she's describing the physical situation was so challenging and also the role itself was so nuanced. So आपके लिए सबसे difficult scene क्या था? मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऐसे व्हेन यू आर वर्किंग आउट ऑन योर कैरेक्टर, सो दैट टाइम देयर इज राइटर अपने हिसाब से लिखते हैं, देवाशीष ने अपने हिसाब से लिखा था, सब कुछ था, लेकिन उसमें एक जो वुमेन एलिमेंट था, एक जो औरत का एलिमेंट था, वो डाला. तो मतलब उसमें एक होता है कि एक अनलॉक सिस्टम उस कैरेक्टर की ढूंढना. हर कोई पात्र जब भी कुछ भी काम करता है, whatever that character is doing, there is a reason behind that.
ह्यूमन बीइंग जो भी हम जब भी कुछ करते हैं, कुछ हमारी जो विचारधारा है या हमारे ऊपर जो भी संस्कार है, वो सब कुछ डिपेंड होता है कि किस प्रकार का हमारा बैकड्रॉप है, वो किस प्रकार की महिला रहेगी, क्या हुआ होगा, उसने जिंदगी कैसे जी होगी, जो उसकी पूरी बैक स्टोरी है, उसके ऊपर फिर आपकी इसकी जो मेंटल अवस्था है, आपकी इसकी जो भी स्थिति है, वो कैसे हो सकती है, इसके लिए कौन सा बैकग्राउंड चाहिए। आप जब तक वो सोल ढूंढ नहीं पाते हो ना, तब तक आप कैरेक्टर के पास ही नहीं जा सकते। जो भी वाक्य उस पात्र ने बोले हुए हैं फिल्म में, जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी कृति कर रहा है, जो भी घटनाएं हैं फिल्म में, उसमें उसका टेक क्या है, उसके लिए आपने अपना 100% कन्विंस होना और वो सोल ढूंढना, उसके रीजनिंग ढूंढना, ट्रूथफुलनेस से ढूंढना, वो पार्ट बहुत बड़ा था फूलो कर्मा के लिए। क्योंकि ये पात्र मेल भी हो सकता था, लेकिन ये फीमेल है, तो फीमेल होने की वजह से क्या है, उसकी कौन सी इमोशनल टाइप है, हम बहुत इमोशनली, क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत ही इमोशनली रिच होती है औरतें, बहुत ही रिच होती है इमोशनली। फिर वो इमोशंस जब चले जाते हैं और आप जब भिखारी बन जाते हो, आपके अंदर का जो सोल है वो चला गया है, आप जब वैसे बन जाते हो, तो आप कैसे बन सकते हो, इसका जो एक इमेजिनेशन है उस पात्र का पूरा, इस वजह उसका ठहराव है, उस वजह से आपने देखा होगा पूरी फिल्म में मैंने आंखें ब्लिंक नहीं की हुई है ज्यादा जगह पे, हार्डली एक दो जगह पे, वो भी डिसाइडेड है कि ब्लिंक करना, क्योंकि ब्लिंक होनी प्रक्रिया जो है ना, वो सजीव होना जताती है, क्योंकि आपको सारे सेंसेस आपके एक्टिव है, जब आपके सेंसेस ज्यादा एक्टिव नहीं है, तब आप आंख बंद नहीं कर पाते हो, आप नम हो, तो वो ऐसे सारी चीजें ढूंढना फूलो कर्मा के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रयास रहा, वो मेरे लिए एक कठिन प्रोसेस था। ये आप देवाशीष जैसे डायरेक्टर के साथ हमेशा कर पाते हो, वो है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, फूलो कर्मा का कौन सा एनिमल इंस्टिंक्ट हो सकता है, वी फाउंड शी इज क्रोकोडाइल, वो अपने टेरिटरी में आने तक वेट करेगी, वो कभी किसी से कुछ करने के लिए नहीं करेगी, तो हर बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे तो पूरा एक उसके ठहराव है, एक शांतता है, उसकी आंखें, और फिर उस हिसाब से वो शॉट्स लेना, कंसीव करना, वो सारी प्रक्रिया आगे जाके होती है, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक कठिन प्रोसेस था। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है कि परफॉर्म करने के लिए सीन कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट किया, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगी, वो था मेरे लिए क्लाइमेक्स वाला सीन। जो भी है आपका पात्र एक सोच पे आ चुका है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक ये वो नहीं होता, क्या कंप्लीट होने वाला है या इनकम्प्लीट होना, उसको कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो अपने सूझबूझ के साथ अपना, उसका एक है कि मेरी दुनिया बर्बाद कर दी है, तो वो रिवेंज है उसके अंदर, तो वो रिवेंज वो उसको खुद ही को खा रहा है, वो खुद ही को मार रहा है। इस वजह से आप फिल्म में सीन देखोगे, मैं ऐसे सो के उठी हुई हूँ, तो मैं सो के नहीं उठी हुई, मैं ऐसी ही जगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे वो सोने भी नहीं दे रहा है, आपकी मनोवस्था आपको सोना भी आपको नसीब में नहीं हो पा रहा है, आप ढंग से खा नहीं पा रहे हो, आपके अंदर का जो रिवेंज है वो आपको जीने नहीं दे रहा है। लेकिन जब जाके दसरू मुझे सामने दिखाई देता है, उसके बाद दसरू के साथ मुझे वो बच्चा मैंने पहले भी देखा है, तो दूसरी बार जब बच्चा मैंने सीन में देखा था, तब मेरे साथ अंदर कुछ घटा था जो बहुत ही नेचुरल था, क्योंकि आप जब किरदार जीते हो ना, आपको समझ में नहीं आता आप कब अपने जिंदगी के पटरी में से एक किरदार की जिंदगी के पटरी में चले जाते हो, आप आपका खुद का जीना भूल जाते हो और आप उस किरदार में रहते हो। तो वो क्लाइमैक्स सीन वाज सो डिफिकल्ट, आई हैव टू कंट्रोल माय ऑल इमोशंस, एंड फिर भी मुझे उस बच्चे को देखते हुए कुछ लग रहा है, मुझे उसको देख के हुआ है, मेरा रिवेंज, मेरे अंदर का औरत होना, मेरे अंदर का माँ होना, मेरे अंदर की सारी परिस्थितियां, मैं किस बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं किस जगह से हूँ, मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, सब कुछ उसके एंड में, सब कुछ जो उसके एंड वाले सीन में आप अगर आंखों में देखोगे तो वो सारी चीजें अंदर है जो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो जो था ना, वो मेरे लिए सबसे भरा हुआ और बहुत ही कठिन सीन था परफॉर्म करने। आई कैन टोटली इमेजिन। और ये सब करने के बाद मतलब आपको थोड़ा टाइम लगता होगा इमोशनली टू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, के नहीं अब आपको अब यूज्ड टू हो चुके हो? मेरा ये इससे निकलना, मतलब नॉर्मली मेरी जो मैंने जितनी भी काम अभी किया है, मैं पसंद करती हूँ उसमें रहना, क्योंकि आप जब काम करने लगते हो ना, तो आप खुद को भूल के उस कैरेक्टर से प्यार करने लगते हो और आपको ये दूसरा जीवन है ना, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन दिस टाइम मेरा खुद का बच्चा 4 महीने का था, जो एक इमोशनल माँ डिजर्व करता है, बिकॉज वो फीडिंग बेबी था। तो मेरे अंदर जो कुछ भी फूलो कर्मा परफॉर्म करते वक्त जो भी अंदर घटता था ना, जो भी इंस्टिंक्ट आते थे ना, वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं थे।
तो मैं एक ही चीज करती थी, जो विदेशी मेरे साथ रहती थी, विदेशी के बगैर फूलो कर्मा कंप्लीट नहीं हो सकती थी, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन भी। तो हम लोग हमेशा साथ रहते थे, और हम लोग गाड़ी में एक ड्राइवर हुआ करते थे, हमारा ड्राइवर कभी बदलता नहीं था, विद द ग्रेस ऑफ अनुपमा, हमेशा हमारा सब सेटल रहता था, सब सिस्टम सेटल था हमारा। के गाड़ी में बहुत ही अलग तरीके के गाने बजते थे, हाई स्पीड पे, वो मतलब हाई वॉल्यूम पे रहते थे, और हम जो नाचते थे गाड़ी में, हम भयंकर नाचते थे, और वो रिक्वायर्ड था हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली रिक्वायर्ड था, क्योंकि मेरे बच्चा एक अलग माँ डिजर्व करता है, जो उसकी खुद की माँ है, क्योंकि वो फीलिंग में से मेरे सारे थॉट्स, मेरी जो भी अंदर, क्योंकि आप कितना भी सोचो, आपके अंदर वो एंगर, वो रिवेंज, वो सब कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, आप वल्नरेबल स्टेट में रहते हो। तो फिर पूरा डिटॉक्सिफाई होते थे, हम नाचते थे, रोड के इर्द गिर्द के लोग हमारी गाड़ियों की तरफ देखते थे कि ये कौन पागल लोग हैं जो ऐसे जा रहे हैं गाड़ी में से, लेकिन हम फुल ऑन नाचते थे और हम डिटॉक्स करते थे, और देन मैं फिर वॉटी रूम पे पहुंचती थी। लेकिन जब सुबह उठती थी और मेरे बच्ची को छोड़ती थी ना, उसके बाद फिर मैं दुनिया में किसी की नहीं, कुछ कई बार तो लोग ऐसे मेरे बाजू में रहते थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाजू में नहीं थी। एंड दीज काइंड ऑफ फिल्म डिजर्व दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन, और हर किसी का, मेरे ख्याल से हर किसी का होगा वो, मैंने तो मेरी प्रक्रिया बता दी। बट वाओ, दैट्स अमेजिंग। आपके खुद की छोटा बेबी था उस टाइम, उन दिनों में, एंड यू वर शूटिंग आल्सो विद अ स्मॉल बेबी ऑन द सेट्स। यस, मखीजा फिल्म, अनुपमा का एक औरत होना, पंकज, मतलब यहाँ के मर्द भी हमारे तकरीबन औरत है, मतलब सेंसिटिव है बहुत, दे आर वेरी सेंसिटिव, वो सब कुछ था। लेकिन मैं अभी मतलब अनुपमा को, आई वांट टेक अपॉर्चुनिटी एंड वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मेघा को शायद मैंने बताया है ये, मुझे ना रोज डर लगता था। ये फिल्म एक बहुत ही अलग क्रूशियल सिचुएशन में बन रही है, बहुत कम दिनों में बन रही है। अनुपमा, देव, इनके सब चेहरे उस वक्त आप देखते थे ना, तो एक मतलब तकरीबन एक योद्धा निकले हुए हैं वॉर्स पे सारे लोग, क्योंकि आज कौन सा चैलेंज है हमें पता नहीं, लेकिन हमें फिल्म अच्छी बनानी है। तो इन लोगों के चेहरे देखती थी, और मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती थी कि मेरा बच्चा भगवान करे फिजिकली फिट रहे, क्योंकि एक माँ तभी कोलैप्स होगी अगर उसको जरा सा भी बुखार आ गया या उसको कुछ हो गया, तो मैं बहुत ही अंदर से टूट जाऊंगी। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि प्लीज उसकी हेल्थ अच्छी रखना, क्योंकि वो झारखंड में जा रहा है, झारखंड से वो उड़ीसा जा रहा है, बहुत ही टेम्परेचर यहाँ का वहां हो रहा है, धूल है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे की हेल्थ को संभाले रखना। और मुझे रोज सिर्फ एक ही डर था कि प्लीज मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी रखना, क्योंकि वो एक चीज है जो मुझे अंदर से हिला सकती है, और मैं अगर अंदर से हिल गई तो फिल्म हिल सकती है। So वो एक true. डर My था God, मेरे that's अंदर। that's like amazing to hear this part of the production. I mean, as a having a small child and caring, and also then coming on screen and doing that intense role. So really, hats off to you there. So I'll come back to you. Let's now come to Nimmy. Nimmy Raphel is an actor, writer, and director. She's the managing trustee of Adi Shakti Laboratory for Theatre Art Research. She's also a teacher and musician. She has trained in the classical forms of Mohiniyattam and Kalaripayattam. So, Nimi, you have a very, again, gray, let's say, gray role in the film, like a sort of an anti hero, but also sort of a hero in terms of this film's perspective, because you're playing the role of the rebel chief, the Maoist rebel chief. And it's a woman who's playing such a role, which is itself, it is against what the common perception is. We always perceive these, the, rebels and the Maoists to be men, and here is a woman playing that role, and you're like this tough woman. So tell us about your research, about the Maoist. What did you find, and what helped you to prep for this role? Well, I come from Kerala, a place called Wayanad, and coming from this area, the talk of Naxalite and Maoists are things that we usually hear, and we have a woman in Kerala called K. Ajita. She is from Calicut. And in the 1960s, she was the only woman Naxalite who was part of the movement. And she, there are stories of her that you can read on internet. And, she spent a lot of time in the forest, and how dedicated she was to the cause. So I
we keep hearing these stories. So I had her in my mind when I was sort of prepping for the role, and I think it's just not prepping for the role. I feel sometimes it doesn't matter what movement that you are aligning towards. It could be an idea, it could be a concept, it could be a belief that you have. It's the conviction at which you move towards that idea in order to make something possible. And as women, we constantly move basis. So I don't know if these kinds of difficulties are very alien to us as women. It's something that we are constantly reminded of, something that we constantly comes to contact with. So for me, playing a rebel is easy part, because we are all that in our daily life. And to sort of make it happen on screen, I sort of thought of Ajita Chechi, as everybody calls her in Kerala. So I had her in my mind. But what was more striking for me was Devashish and Anupama's commitment to the project. We go through different kinds of environment in our daily life. I sort of felt for the very first time as a director, Devashish was there available for me. And I don't think it's just my impression. I'm sure that everybody would feel the same. Sometime I feel in a film set, everything else gets taken care except the actor. But they was there, making sure that you've gotten a bottle of water, or there is some stone under the actor's feet, or everybody has to get an umbrella if everybody is standing under the sun. So this kind of democratic process was very, very alien to me in a film set. And I really really, really felt very touched by that a director and a producer actually thinks about the actor. Doesn't matter you are even playing a small role, which then makes it like Smita was saying, that you get a platform to play well. So you can have ample amount of research time, you can have ample amount of honing your craft, your technique. But if your performance environment is going to be alien to you, then your performance can get hampered. So I felt very comfortable in that environment to perform, which I feel then is my responsibility as an actor, because everybody else around is providing you that comfort, and hence you feel that responsibility to play well. So I felt that particularly in that set, which I have not felt it in any other film set per se. So yeah, that was a very conducive atmosphere for a performer. So it's just not the research, it's also the environment where you play. So that was Right. heartwarming for one. Great, great. So you're the second person who is now giving full points to Dev, so for his sensitive and taking care of the audience, and Anupama as well. Okay, so I'll come back to you, and let's come to Bideshi, who has who has played this role in the film as somebody who's the right hand person of one of the main characters. So Megha Mathur is an acting graduate from Shriram Center for Performing Arts, Delhi. She's been associated with theatre since 2014, and she now works in cinema, web series, and the theatre circuits of Mumbai. And Megha, as we were just talking earlier, the film has everybody has gray shades. There's nobody in the film who's completely black or completely white. So you've been somebody who's acted in theatre as well. Tell me about how you played this particular role, and what was your most intense experience, or what did you learn from the set of Joram? Um, so initially, when I was offered this character, I mean, I was introduced about this world was through this short film that Devashish had made called Cycle, and that sort of gave me an introduction to the world that I was signing up for, and the moment I watched that film, I really wanted to be a part of it, and yeah, that was something that actually pushed me to go and take a step forward and sort of try to understand the world that I'm probably not aware of. I have been raised in when I was little, I used to go and visit my grandparents,
who used to stay in Koraput. But and I used to meet the people there and the local and the tribals there. But I wasn't really aware what it takes to sort of deal with the situation and what we are advocating and sort of kind of understand uh, the life they are currently living. So I just took a little trip to Dumka, which is in Jharkhand, and I stayed with a local there, with a tribal family there, for a couple of days, and I lived like I tried to understand what exactly is the situation. I mean, what does it feel to be a part of them? But I mean, no matter how much you try, you can't really be a part of that. They are very, very sweet, but what they're coming with is very intrinsic and very deep rooted. So they were very sweet to actually, welcome me and make me a part of their daily routine. And I got to observe them closely, but that sort of gave me a little bit of idea of how grounded they are, and they just don't need anything else. Development and all of these things, the capitalistic economy that they are living in is also, I mean, it's just made, and we are thriving on it for some reason. I don't know. The life is much sorted. If back in village, they just did not need anything. They would sleep early. They would wake up early. They had their own farms. They were they had their rice and everything. So coming from a urban city like Delhi, I come from Delhi. So I was like, I really needed that. So it was my little takeaway from. I couldn't really contribute much to the film that way, but it was just something that I wanted to sort of mold inside me and to be able to understand or deliver, at least contribute to the film as much as I can. So I did that, and I came back, and I just also something that I always get involved in is the ahar of the character. So I was curious about what my character will be looking like. She would be, because it was very difficult to crack for Bidesi what she would be. I mean, she's young, and she comes from tribal, and she's representing Phulo Karma, that company, and she wears her tribalness on her sleeves, but she's young, so she has the access to technology. She sees the world around. What is she exactly standing up for? And there was an inherent questioning that she was doing. So all the backstory that Devashish had given me, it had so many gray shades of, she was obviously she was revering, she revered Phulo Karma, but then she was also very conflicted about what she stands for, and she doesn't really abide by the violence probably sometimes, but also she has to do something. So there was always a tussle between her and the fact that she had so much access, and there was so many layers to. I mean, Videsi was like given so many backstories, like a proper backstory with her father, how her relationship with Babulal Karma was. I mean, Babulal Karma was Phulo Karma's husband, and when she was little, she used to travel with them in the car to the city, and she used to see the city, and she was lured with that, with the idea of living the life like that, that luxury and everything. So, but when she would come back, she would be in that in the village, and she was supposed to go to a school which was far away, and and the intention of Babulal Karma of Videsi's father was to send her far away so that she can get education, which makes her mix up with the crowd. But she was ridiculed while she was there. The kids would call her Videshi lagdi hai. Like that was the way she was mocked. And that's how she gets the name Videsi. Her real name is Tuya, but she gets mocked by being called Videshi. So all of those stories kept on, working for me, and it was very interesting. And every time I was there on set, the there was a very organic flow of energy that was happening among everybody on set, because everybody was so committed to the subject of the film that it was very free flowing, and we were deriving out of each other's energies. I remember there was one scene, the last scene, wherein Phulo Karma is in the car and she is getting shot, and there was one scene where I had to just walk from that. I hear the gunshot, and I have to walk towards her, because I get driven that, everything in my world is completely devastated. I don't have anything to go.
and there was a walk that I took, and I had to go towards my father, and my father was coming towards me. My father is is somebody who's he's not, he can't hear, he's deaf in the film. So that actor, when he got the brief of how I am feeling, and I walked towards him after the shot, I saw him tear up, well up. He was welling up, and it, things like small things like these would sort of pump me up and make me, sort of commit more to the film and my work. It was amazing, and also to see Devashish, how he was on set. There were, I mean, there were very like Anupama was making sure that all the actors was getting the umbrella, and because it was scorching heat, 48 degrees temperature, it was crazy. Wow. But there were times when we would see that Devashish was, he was running here and there, and so there were times when we would like, just take the umbrella, and he was like, no, I don't need it, because he was so much in the flow, and I was like, oh my god, look at that, and there was so much deriving from that energy as well. So it was just the continuous energy flow, which was amazing, and it kept me going all throughout very seamlessly. It was that kind of an experience. Great. Yeah. Hearing you speak also is giving us a good idea of what the experience must have been like. So thank you for sharing that. I'll come back to you. So Anupama, a lot of people have now talked about your contribution and the way you've supported them. And also what's coming out is how much attention has been given to the characterization and also to, developing this backstories, about how really getting into the character also requires you to know where the character has come from. So as somebody who has been in part of the industry for a while and seeing all these, according to me, a lot of films of toxic masculinity seem to be dominating our TV screens and our cinema halls these days. Why do you think it's so difficult to make a gender conscious film? And why are gender conscious films losing out on public attention? I just think there are a lot of storytellers with gender conscious subjects and मुझे नहीं लगता किसी को भी डोरमैट बनना पसंद है जिंदगी में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक? चाहे वो बच्चा हो. Like everybody likes dignity and to be at par with everybody else. So मैं ये नहीं कहूँगी कि gender. I mean, I don't think it's the industry as much. I think let's first start from the people. Yeah. वो कैसा मुल्क होता है और वो कैसे लोग होते हैं. एंड मैं सिर्फ इंडिया की बात, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ, जहाँ आई मीन लुक एट इजराइल एंड पैलेस्टीन राइट नाउ, कि आपको फर्क नहीं पड़ता जब आप सुबह उठते हैं और इतने बच्चों के वीडियोस आप देखते हैं जिनकी माँ या तो मतलब माँ वेट कर रही है कि बच्चा बस किसी तरह अब सो ही जाए जिंदगी भर के लिए, बिकॉज इट्स सो पेनफुल टू वॉच योर चाइल्ड लाइक दैट, राइट? सिमिलरली विद वुमेन, आई एम सेइंग वो कैसा मुल्क है जहाँ पे आप रैंट करते रहते हो कि यार इस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ये दिखा रहे हैं वो. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस आर ग्रॉसर्स. वो सारी सुपरहिट फिल्में हैं, कोई भी वजह हो. तो अगर वो कहानियां ही भाएंगी, क्योंकि भाई रही है क्लियरली, आपके थिएटर्स भर रहे हैं, और आप चाहे उसकी निंदा करने के लिए आप उसे देखो या आप चाह कर खुद को ढूंढ के उसे देखो, द फैक्ट इज यू आर मेकिंग दीस फिल्म्स वर्क, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो देन, और उसके वजह पर जब आप when there are films that are sensitive, that have issues, वो वर्क नहीं करती हैं, तो आप ही तो रिजेक्ट कर रहे हो ना वो कहानियां. तो फिर किस बात, और मतलब किस बात की शिकायत और किस बात की बहस कि, और ये क्या है कि हमारे यहाँ वैसी कहानियां नहीं बनती. तो जब बनती है तो आप क्या जिम्मेदारी निभाते हैं एज एन ऑडियंस? फॉरगेट एज एन ऑडियंस, एज पीपल आप कौन सी जिम्मेदारी निभाते हो? क्या आपके घर में आपकी बीवी बेटी इन सबकी उस तरह की इज्जत है? जब आप अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट करते हैं कि सुबह 5 बजे जब दूध वाला घंटी बजाए तो हमेशा वही उठ के जाए, आप कभी ना जाए, तो ये इज्जत, ये तो शुरू यही से ही हो रहा है ना. तो जिस मुल्क में या जिस समाज में इस तरह से आप डील करते हैं चीजों को, तो वहां फिर कहानियां भी आप जैसी ही होंगी. बाकी अगर हम वैसे अगर मैं जोरम के एक्सपीरियंस में आऊं, तो this script is something that Dev has lived with. They actually, Manoj and Dev together, Manoj sir and Dev lived with it for almost 7 years. And what is incredible is the kind of engagement. ये जो सबके पास back stories है,
विदेशी ने अपनी बैक स्टोरी बताई, फूलो ने थोड़ी सी बताई, समक्खा ने तो नहीं बताई। इन सब की बैक स्टोरीज थी जिन पे इतना प्रेप था, और ये प्रेप ना हर जगह दिखता है। 3 महीने से अगर लोकेशन ढूंढे जा रहे थे, सबको पता था क्यों वर्क नहीं कर रहा है। ये बहुत ब्रीफ करते हैं, बहुत बात करते हैं, नोट्स होते हैं हमारे पास। अगर हम बैठते थे तो हमारे पास नोट्स होते थे। तो आप जब मुझसे पूछती हैं कि चैलेंजेस, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वो पढ़ रही थी, मुझे चीजें दिख रही थी, and we just had to make those things happen, right? मैं औरत थी एज अ प्रोड्यूसर, पर मेरी टीम जो है, माय एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इज पंकज, यंग बॉय, लाइन प्रोड्यूसर इज अश्विन, एंड आई एम यंग बॉय यार। इफ देयर वाज एन अम्ब्रेला एवरीवेयर, इट इज बिकॉज ऑफ दीज बॉयज। सो आई एम श्योर ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जिनमें इंसानियत हो, जो डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जो को एग्जिस्ट करना चाहते हो। मुझे लगता है इट्स अ टू वे प्रोसेस। और अगर इस देश में कहानियां ऐसी नहीं बनती तो उसकी बहुत सारी वजह है, और मुझे लगता है सबसे पहले तो सामाजिक वजह है। फिल्में समाज को बदल देंगी ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब नहीं, मतलब एक, आप ये तो नहीं कह रही कि आज का तुम मैथ सम सही कर दोगे तो तुम्हारा समाज बदल जाएगा, तो फिल्म पर इतना प्रेशर क्यों, है ना? शादी पे गाने नहीं बजेंगे तो आप नाचोगे कैसे, वो तो सबको चाहिए, द बिग बिग इंडियन वेडिंग। सो लेट अस नॉट पुट इट दिस वे, आई थिंक वी शुड जस्ट फ्लिप इट एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि वो कैसा समाज है जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सुपरहिट बनाता है, और जो एक सेंसिटिव औरत की बनाई हुई औरत की कहानी, फॉर एग्जाम्पल, उसको तवज्जो नहीं देता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ फिल्म प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स अ समाज प्रॉब्लम। That's a good point. And in fact, a lot of speakers on eShe have brought up this point about how it's difficult to get funding even for films with lead female characters and nuanced characters. So the one that is really difficult for me right now is a very small film, first time female director. She's been a writer, very sensitive, young adults, 3 girls coming of age. That's the problem film. That's the one that's going to be a very challenge to set up. okay, so let's come back to this topic. We're talking about bringing out the different aspects of womanhood. So मैं अभी स्मिता जी को लाती हूँ। आप हमें बताओ कि ये जो ट्रोप होता है फीमेल विलन का, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं टेलीविजन पे या फिल्म जैसे फिल्म्स हैं, इज देयर अ पैटर्न, और इस कैरेक्टर का क्या डिफरेंस है उस पैटर्न से? सबसे पहले जो मैं देखती हूँ कि जैसे मराठी में देयर आर लॉट ऑफ स्त्री प्रधान फिल्म्स जो जहाँ पे लिखी जाती है, जो लॉट ऑफ वुमेन अंदर के जो औरत के बहुत सारे लेयरिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं उसको दर्शाने वाली, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्में होती है। जैसे मैंने तो मराठी में 72 माइल्स फिल्म की है, जो बहुत ही सत्य घटना है। एक लेडी ने 2064 में 184 किलोमीटर ट्रैवल अपने बच्चों को हाथ में लेके वॉक करके जो किया हुआ था, या ऐसे कुछ। मैं यहाँ पे अभी जब देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि औरतों के ऐसे कितने सारे लेयरिंग्स हैं, कितनी सारी भूमिका है, कितने सारे ऐसे एस्पेक्ट है जिससे आप फिल्म की एक बहुत ही अत्युच्च अनुभूति आप दर्शा सकते हो, वो वैसे होल्ड कर सकते हैं, वैसे होल्डिंग पॉइंट्स है। तो उसको एक अलग तरह से देखना, मुझे जहां तक लगता है कि फूलो कर्मा कैरेक्टर, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर, एक तो ये कैरेक्टर इस तरीके से लिखा गया, औरत के इस प्रकार के इमोशंस को एक बहुत ही निडरता से दिखाया गया है कि एक औरत ऐसे हो सकती है। आप जब फिल्म खत्म हो जाती है तो दसरू की एक कहानी है जिसके साथ लोग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन फूलो कर्मा की एक कहानी लेके जाते हैं एंड में। इस तरीके का जो औरत को देने का नजरिया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जोरम में बहुत ही ब्रेकअप हुआ है, और वो बहुत ही लेकिन गिनी चुनी फिल्म है। ये 5-6 ऐसे अगर साल में निकालो तो आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि देवाशीष जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स, मेकर्स होने चाहिए जो ऐसे ये जो स्वरूप है स्त्री का, उसको वो इंटरेस्टिंगली दिखाए, ताकि हम जैसे एक्टर जो है वो उसे काम कर पाए। आप मुझे दिखाओ फूलो कर्मा जो है जोरम की, वरना मैं जिस लड़की ने इस फील्ड में आई हूँ तब मेरे कलर की वजह से, मेरे दिखने की वजह से, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म मैंने झेला हुआ है मेरे इनिशियल स्टेज में, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि यार मेरे अंदर काम करने की काबिलियत,
मेरे अंदर एक जज्बा है, जुनून है, जो मुझे रात को सोने नहीं देता, वो है मेरे अंदर के एक्टर होने का। मेरे अंदर बहुत कुछ भरा पूरा हुआ है। एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, लेकिन हर बार वैसे प्रकार की स्क्रिप्टें या वैसे प्रकार की फिल्में आपके सामने हाथ में नहीं रहती है, आपको सालों इंतजार करना पड़ता है उस चीज के लिए। जोरम की जो फूलों कर्मा है, वो जब मैंने परफॉर्म की थी ना, मैंने सुकून भरी नींद सोई हूँ। जब मैं शूटिंग करके जब मैं मुंबई पहुंची, तो मैंने ऐसे बाहर जब देखा आसमान में, रात में, जब पहली रात में, रात को 11:30 बजे घर पहुंची, मेरी बच्ची को, मेरी मम्मी को घर में सेट कराया और मैं मेरे बालकनी में गई। मेरे बालकनी से ओपन स्काई दिखता है। मैंने कहा यार कितने, मतलब तूने आज तो सुकून भरा ये सब कुछ दे दिया है। ये रोल परफॉर्म करके आके मुझे एज अ वुमन अंदर से बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ कुछ ट्रुथफुलनेस है इस पात्र में और इस जो परफॉर्मेंस में। तो मुझे एज अ क्रिएटिव पर्सन, मेरे अंदर जो भूख है, मुझे बस इतना लगता है कि ये भूख मेरी फुलफिल हो जाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसे किरदार, ऐसे, क्योंकि हर चीज के लिए जगह है ना आपके, हर जॉनर के लिए जगह है, हर चीजों के लिए जगह है, तो ये भी चीजों के लिए इक्वली जगह होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो डेप्थ, वो सेंसिटिविटी, वो अंदर से वो सच्चाई आना बहुत जरूरी है, ताकि हम बहुत सारे जो जॉनर्स है और बहुत सारे जो औरत के लेयरिंग्स हैं, वो हम एक्सप्लोर कर पाए, उनको एक अच्छे से देख पाए, उसको एक ट्रॉफी की तरह, या उसको एक ही आईने में। There are a lot of layerings women have inside, and these layerings are so beautiful. And I just want that exploration should, come out, और वो colors आ जाए. That's right. It's a very strong perspective. Thanks for sharing that. I'll bring Nimmy here. Nimmy, tell me, you have been working in theater as well, and you've been working for artists in theater as well. So, what is the legacy that you would like to leave with your work in films and in theater? We have a saying that an artist is really born when she or he becomes 40 years of old or more, or in their 60s. And I think there is a certain truth that I would like to take from that, which is that as a young artist, you go through a certain kind of trial and error. You're doing somebody else's work, you're trying to find your feet, you're trying to also find what you want to really tell through your art. You're also trying to find the kind of aesthetics that would make sense to you and for the others, and also to come to a place where you can proudly fail and not be affected by it, and not have the sense of that, are you being judged, all those insecurities that can come as an artist, sort of goes away from your skin as you age a little bit. And I think more than legacy, I think I would like to get to that space where I leave my writing, or the way I look at my work, or the way I direct, is not seen as a female director, but a director who has a voice in saying something that is relevant to the time that she lived. And I think that would be sufficient. I don't want to leave any legacy. I don't know if I'm capable of that. So I think that would be good, or if one can reach there, I think that would be sufficient. But taking forward from what Anupama and Smita said, that we're talking about nuanced storytelling. Do you think, as a society, we are losing the art of nuanced storytelling, and can theater be our last refuge when it comes to these kind of stories? I think, see, the society that we live in is quite complex, and that is quite reflective in our day-to-day dealings as well. I think there are different kinds of audience for different kinds of work that we see, and it's also a self-exploration, isn't it? I think Anupama was saying that the change has to come from within the environment that you placed yourself. You cannot say that the change is outside of myself. It has to be here first, and then probably one has a way of impacting your immediate environment where you occupy. So I feel different kinds of genres have existed, different kinds of viewing work has existed. You can see Tom and Jerry and be inspired by making great work.
You can see great work and then do something silly. I think we are complex and also flexible in that way. So we can watch popular movie as we say it, or we can watch theater if that's what you want to do. It at the end of the day, what is actually speaking to you, and if multiple things speak to you, I think that's what we should do. And nuance is an aesthetic choice. And I think that aesthetic choice is a very subjective thing. It cannot be generalized. So I feel it's a growth, definitely, but that growth is very individualistic first. It has to come from within first. And then maybe if it is strong enough, it can sort of spread in your immediate environment. And I think that's how simple I want to see it, because if you make it more complex, your functioning as an artist becomes difficult. So, Megha, tell me, you are one, I think, one of the youngest people on the set, I think, in this film. So what are Perhaps, yeah. what are your aspirations for gender portrayal in Bollywood that you'd like to see and that you'd like to be a part of? Yeah, that's a question that I've been actually asking myself lately, ever since Joram happened. Yeah, I've been observing things like the films that came along with ours. I observed that, and that got me actually reminded of the fact that the kind of films that actually make a lot of money, or a lot of they become a hit, or they are termed as a success, are generally not women oriented. I mean, we don't see that often. uh, the fact that I was actually thinking that I actually went back and started listing the films that are made wherein the female protagonists are in the front, and the male protagonists, let's call them the stars or whoever. One of them was Dear Zindagi. I love the fact that Shah Rukh Khan came and he supported the female protagonist. That story was all about Alia's character, and he was there as a supporting lead. And I loved how it worked. The story was the highlight, and he was just getting into the fabric so well, and it was just amazing story. So I think cinema stories like this and films like these should be made, and I really wish that more of the stars, or the people who have big responsibilities, the male protagonists, who feel that they have they are the showrunners, or probably they are the ones who on whom the money gets invested on. And uh, I think if they start to sort of support the female lead and female oriented stories, it's going to be a great mix, because I still feel that we are working. I mean, Makija Film is working towards making a very female oriented, female rich, or equally balanced kind of a story, and a working environment. But and it's happening in capsules, it's not just happening in the bigger lens. And it's rightly put, it's the reflection of our society. People are not willing to watch something of that sort if they don't see the pre-existing men supporting something of this sort. So I think I really wish that that kind of I really wish to have a world of cinema, and the place where we get the support of the main stars, or the A-listers, to sort of Hmm. actually come in and support the stories than just Hmm. them be on the cover of that sort. I don't think this is something that I've recently come up with after seeing this. So yeah, Piku being one of them, and Dear Zindagi, and Yes, all of these Piku as stories. well. Yeah. Yeah. English, Actually, a English. lot of yeah, I would like to actually open this question to everybody that what are your aspirations for films moving forward from here? All of you are trying in your own ways, either as an actor or as a producer. We all, जैसे अनुपमा ने कहा, नियत सबकी similar है कि we want to see change. We want to see women more respected on the screen and presented in more holistic roles. बट वो कैसे अचीव करेंगे, या क्या आप होप करते हैं वो कैसे अचीव करेंगे? कैन एनीबॉडी कैन आंसर दैट? सो मुझे इसके ऊपर एक थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी निम्मी ने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन बोला है, जिससे मैं सहमत हूँ उस लाइन से बहुत ज्यादा. इट इज वेरी इजी टू आपको ये सिस्टम को ब्लेम करना, आपको ये दिस इज व्हाट हैपनिंग, और एक गिव अप कर देना या कुछ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका सोल, आपका कोर आपको क्या करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है.
मुझे एज एन एक्टर क्या करने सा, किस तरह का काम करने के लिए मुझे अंदर से प्रेरित करता है, यू हैव टू बी, आपको उसके लिए बहुत ट्रुथफुलनेस से अपने लिए खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। जब आप पहले अपने लिए खड़े होते हो ना, तो आप बहुत सारे चीजों के को आप खुद में, जैसे मैं कहती हूँ कि इट इज वेरी इजी, किसी को भी जेलस फील कराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को भी इंस्पायर करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मेरे अंदर की चीजों से ही मेरा बाहर का जो भी देखना है वो बहुत ये हो जाता है। तो आपको अंदर से एज एन एक्टर, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे अंदर से बहुत ही अलग तरह का अपना अपना एक एक्सप्लोर करना है। एक्टर का मेरा मेरा एक जो परसेप्शन है, कैरेक्टर का मेरा मेरा एक जीने का एक जो चाह है, उसको मैं बहुत ही लगे रह कि मैं उसको परफॉर्म करूं, और वो फिर वही मुझे कहीं ना कहीं कहीं पे तो भी लेके जाएगा। वो मुझे मेरे थॉट्स को भी कहीं लेके जाएगा। वो मेरे अंदर के जो भी एक्सपीरियंस मुझे एज अ वुमन एक्टर, मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहेंगे उसके ऊपर का मेरा जो भाष्य है वो भी मुझे कहीं पे लेके जाना है। लेकिन पहली स्टार्ट मेरी खुद से है कि मैं खुद से, मुझे जो कहना है, मुझे जिस प्रकार का काम करना है, जिस तरीके से करना है, इसके लिए मैं तो पहले थोड़ा पुख्ता हो जाऊं और मैं तो थोड़ा उसके बारे में डटी रहूं, मैं अड़ी रहूं। ये जो है मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर से आपको एज एन एक्टर या एज अ क्रिएटिव पर्सन जो भी करने की इच्छा होती है ना, आपको खुद पहले डटे रहना पड़ेगा, उससे बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि फूलो कर्मा जो कैरेक्टर है, मतलब जब भी फिल्म लोग देखते हैं, मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं वो देख के कि यार ये कैसे कैरेक्टर के प्यार में है। वो एक्चुअली वो उस पात्र के प्यार में है कि अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमने आजू बाजू में अपने इर्द गिर्द ऐसी कई सारी औरतें और उनके जिंदगी का जो भी अंदर का सौरो है या अंदर का जो भी दबा हुआ है वो लेके घूमती हुई देखी है। उसमें से एक फूलो कर्मा से रिएक्ट हो रही है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द में मैंने ऐसे कैसी देखी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सारे जब अप्रिसिएशन मिलते हैं ना मुझे, तो मुझे वो महसूस होता है कि इन्होंने वो इर्द गिर्द का देखना जो है ना, तो शायद मेरा कैरेक्टर अगर उनको मजबूर करे ये देखने के लिए, मतलब फिल्म पे होते हैं दिस इज फूलो कर्मा लोग, या दिस इज विदेशी लोग, या दिस इज दिस लोग, तो हमें अच्छे से बहुत इसकी बुनाई कढ़ाई करना चाहिए, और उसका स्टार्ट खुद से होता है। दैट आई want to admit. Yeah. Nimmy, please go. Yeah. Maybe want to say something. So, actually, something that I feel as a theatre actor who does very few, who have done very few. I think the theatre community really watch a lot of movies. We invest. I would say that it has to be a give and take. And I think not has to be. I think it would be wonderful if more directors come and watch theatre actors, because I think it is time to invest in actors, because they are the ones who are telling you what is the character that is going to bring life to what you're bringing on screen. My desire as a theatre actor would be to invest in actors, and there are a lot of actors, and let not the social media tell you who your actor should be for a character. Let that not be the deciding point, because more than anything, the actor can mold your character. Nobody else can do it, because everything else is technology. The actor is the live thing that is bringing life to what is going to move your audience. It's not the technology. An audience who's watching is not going to see how well the camera is moving. Of course, that is very important, but what gives life to the movement of the camera is the actor. So invest in acting, watch more theatre plays, and let not social media tell you who you should cast, because we want to see more actors on screen. I don't know if I'm going to be controversial by saying it, but that's what I feel. Yeah. What Nimmy said, I fully agree with this, and only the one line that कि आपको एक एक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना, और ये जो प्रोसेस है या ये सब कुछ है, मैं जो बात कर रही थी ना वो यही बात थी कि हमें ये ऐसा एक्सप्लोरेशन और ज्यादा करना बहुत जरूरी है। और मतलब मैं निम्मी मतलब खुश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट दिस एनवायरनमेंट वी डिजर्व एंड वी रिक्वायर दिस एनवायरनमेंट।
Mm. Yes, absolutely. Yes, you can go now, Anupama. Yeah, thank you. Um, I think taking a cue from what everybody said, so um, I just want to go back to a very basic thing. I just want to talk about the three women sitting over here right now from Joram. Okay, who are they? What are their choices? And each of them, the kind of choices they've made, and the way I know them, in some ways tells you finally एक तरफ तो है यार कि समाज अगर जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक इश्यू ज्यादा लगता है फिल्म मेकिंग इश्यू कम लगता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आई एम सेइंग दैट द इंडस्ट्री द एक्टर्स डू नॉट हैव रिस्पॉन्ड आई एम नॉट सेइंग दैट या and to therefore underline that part that what is it that proactive action can bring forth, what is it that you do in your own way to be able to navigate through all this, I think is where change is. Yeah, and I think I'm very privileged that I work with such people, that I was able to work with such women. The characters came to life and became what they did, also because it was these women, it was people like this who were living them. I think that is my biggest takeaway from this film and from having worked with this team. The film is because it's people like this who were there. Yeah. Great, thanks. Thank you. Thank you so much, Anupama. Thank you. Anybody wants to? We are all very I love you, you love me kind of. ये अलग nepotism है. Actually मुझे वही कहना है कि that's very important. As a woman, you understood a lot of things. आप बहुत सारी चीजें समझते हो, बहुत अलग सेंसिटिविटी से एक दूसरे के साथ जुड़ते हो. आपको ऐसे पॉइंट्स एक दूसरे के कलेक्ट करके घर जाके जाना पड़ता है कि यार this is the beautiful thing I learned. तो अनुपमा से मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ. बहुत सारी चीजें मैं सबकॉन्शियस माइंड में मेरी चली गई है. सच अ स्मॉल इंटरव्यू राइट नाउ, बट निम्मी के थॉट्स जब वो शेयर कर रही थी तो बहुत सारा कुछ एक मिल जाता है. दिस गिव एंड टेक. मैं सिर्फ ये ऐसे भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि ये जो संगति है ना, ये बहुत अच्छे से बनी रहनी चाहिए. ये संगति जितनी बढ़ेगी ना, उतना आपको एनवायरनमेंट बदलते हुए दिखेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You have to talk with each other, you have to exchange your views, you have to आपको अपने अंदर का जो भी है बहुत ट्रूथफुलनेस से एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए. इस शेयरिंग से न जाने कौन कहाँ पे क्या लेके जाता है और न जाने हम कहाँ से क्या उठा के लेते हैं और कहाँ से क्या बन जाता है. So that's really very important. So thank you so much, Ekta, for this interview actually. Yeah. Thanks a lot. Okay. Thanks everybody for being here, and thanks for sharing your thoughts. Thanks a lot. Thank you, Ekta. Thank you, Anupama. Thank you, Nimmy. Thank you. Thank you. Bye.